हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंडमेड क्राफ्ट सोनाली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10 एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। तो इसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नोट्स है। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग की पूरी डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पर थोड़े से पिक्चर्स के, और यहाँ पर फिर स्टोरी ऑफ बेल्जियम है, पूरे पॉइंट वाइज है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स, पॉइंट्स में इजी भी रहता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बेल्जियम और यह स्टोरी ऑफ श्रीलंका है, और ये उसकी एथनिक कंपोजिशन, ये दोनों के एथनिक कंपोजिशन फ्रेंड बोर्ड्स में आ भी चुकी प्रीवियस ईयर। एक बार इसका भी आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों का। देन यहाँ पर मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका के बारे में लिखा हुआ है। और एकोमोडेशन इन बेल्जियम। Why is power sharing is desirable? Forms of power sharing. फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड ये थर्ड, और ये फोर्थ। और यहाँ पर से हमारा एक्सरसाइजेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो आंसर है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज the different forms of power sharing are given below with an example of each. First, horizontal division of power. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, पावर शेयरिंग among different organs of government such as the legislative, executive, and judiciary. It is called the horizontal distribution of power. For example, in India, Parliament enacts laws, executive executes or implements them, and judiciary checks the functioning of executive or laws made by the legislatures. Second है, power sharing among governments at different levels. First point, there are governments at the national, state, and local level. Second, powers are divided among these governments. Third, for example, in India, there is a division of powers between center and the states. There are three lists: union list, state list, and concurrent list. The residuary powers which have not been included in the three lists are with the central government. Third, power sharing among different social groups. First point है, sometimes religious and linguistic groups too share power, as it the case in Belgium, where there is a community government which is elected by people belonging to one language community no matter where they live. Second, such government enjoys power regarding cultural, educational, and language related issues. Fourth, power sharing among political parties, pressure groups, and movements. First point, in a democracy, political parties, pressure groups, and movements control or influence those in power. Sometimes power is shared by different political parties having different ideologies. Such alliances form coalition government. Second question है, state one prudential reason for power sharing with an example from the Indian context. Answer, first, prudential reason. Power sharing helps in reducing the conflict between various social groups, so power sharing is necessary for maintaining social harmony and peace. In India, seats are reserved for weaker section. Example, reservation of seats for SC and ST. This helps weaker section to contribute in running the government. Second, moral reason. It holds the spirit of democracy. In a democracy setup, the citizens too have a stake in governance. The citizens in India come together to debate the policies and decisions of the government. This will put pressure on the government to rethink about the policies and its decisions. Third question. After reading this chapter, 3 students drew different conclusions. Which of these do you agree with and why? Give your reasons in about 50 words. तो फ्रेंड्स यहाँ पर
दिया हुआ है। इसका आंसर है आउसेफ्स statements is quite logical, hence should be agreed on. Any society requires power sharing even if it is small. In a democratic society, members of citizens participate and acquire stake in the system. Power sharing prevents conflict between any two groups. It also generates a sense of belongingness in the society. Fourth question. The mayor of Mechelen, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in the town schools. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate in this Flemish town. Do you think that this measure is keeping with the spirit of Belgian power sharing arrangements? Give your reason in about 50 words. Answer. No, this measure is not in keeping with Belgian power sharing arrangement. The arrangement seek to maintain peace between the French and Dutch speaking communities. By banning French, the mayor will cause civil unrest. Both the languages should be made acceptable in the town's school. This bilingual education system will be better way to integrate the people of the town. Fifth question है, read the following passage and pick out any one of the prudential reason for power sharing offered in this. तो यहाँ बस लिखा था, इसका आंसर है the following prudential reasons are cited into the passage for power sharing. First point, reducing corruption by giving power into the hands of the people and thus making them responsible for their own decisions. Second, increasing administrative efficiency by delegation the decision-making function to the people affected by it. Third, improving the efficiency of the system by reducing the number of middlemen and transferring the planning and implementation to the people concerned through the panchayats. तो sixth question है, different arguments are usually put for this in favor of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the codes given below. Power sharing. A, reduces conflict among different communities. B, decreases the possibility of friendliness. C, delays decision-making process. D, accommodate diversity. E, increase instability and divisiveness. F, promotes people participation in government. G, undermines the unity of a country. तो इसका आंसर है ए. इसमें जो हमारे सही है वो ए, बी एंड डी और एफ है. Consider the following statements about power sharing arrangements in Belgium and Sri Lanka. A, in Belgium, the Dutch-speaking majority people try to impose their domination on the minority French-speaking community. B, in Sri Lanka, the policies of government sought to ensure the dominance of the Sinhala-speaking majority. C, the Tamils in Sri Lanka demanded a federal arrangement of power sharing to protect their culture, language, and equality of opportunity in education and jobs. D, to transformation of Belgium from unitary government to a federal one prevent a possible division of the country on linguistic lines. So, which of these statements given above are correct? इसका आंसर है D. B, C and D are the correct statements. Next question है, match list 1 forms of power sharing with list 2 forms of government and select the correct answer using the codes given below. तो हाँ से आपका से ये कोड्स है और यहाँ इमेज द कॉलम लिखा हुआ है. इसका सही आंसर है फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, 3 का ए एंड फोर्थ का सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Ninth question. Consider the following two statements on the power sharing and select the answer using the codes given below. A, power sharing good for democracy. B, it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Which of these statements are true and false? तो इसका करेक्ट आंसर है बी. बोथ ए एंड बी आर ट्रू. प्रोवाइड कर दे रही हूँ जो कि एग्जाम में हेल्प करेगा. यहाँ पर ये एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का. ये श्रीलंका वाला है एथनिक कंपोजिशन के बारे में थोड़ा है. पावर शेयरिंग क्यों गुड है डेमोक्रेसी के लिए, वो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड्स. ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस.
सिस्टम और चेक्स एंड बैलेंसेस करके भी पूछता है। इतनी कंपोजिशन श्रीलंका। फ्रेंड्स यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के ऐसे क्वेश्चन आंसर वीडियोस नोट्स ट्रिक्स लाने वाली हूँ, तो जिसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और ये मेरी पूरी मेहनत के लिए प्लीज़ मुझे एक लाइक करें कि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिले फ्रेंड्स। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास 10 से रिलेटेड और कौन कौन से कंटेंट या वीडियोस चाहिए, तो मैं वो ला पाऊँ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय फ्रेंड्स।